और अपना पहला चौका लगाया 21 गेंदों के इंतजार के बाद खुर्रम ने। निहायत ही शानदार बल्ले का फेस खोला सीधे बल्ले के साथ। क्योंकि कवर में फील्डर नहीं थे इसलिए मिड ऑफ के फील्डर जो है ये आगे खड़े हुए थे मामूल से, तो गेंद की जो पेस थी उसने मौका नहीं दिया अब्दुल्ला शफीक को। अब्दुल्ला शफीक के अंगूठे पर चोट आई हुई अभी भी आप देख सकते हैं कि वहां इनने मरहम रखा हुआ है। जख्म होने के बावजूद कल ये बैटिंग करते रहे और अब ये फील्डिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा मोहतात रहने की इनको ज़रूरत है क्योंकि इस तरह की ये चोटें हैं इनको बिगड़ना नहीं चाहिए। अभी इस सीज़न की इब्तिदा है, हम समझ सकते हैं इनकी कमिटमेंट है, ये बहुत प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं अब्दुल्ला शफीक, लेकिन कई बार आपको बड़ी पिक्चर देखना पड़ती है। आगे 2 टेस्ट सीरीज बैक टू बैक पाकिस्तान में आ रही हैं और ये जुज़े लाजिम है पाकिस्तान की टेस्ट टीम का अब्दुल्ला। अगले ओवर में खुर्रम मंजूर सामना करेंगे 27 पर 1। आमिर यामीन अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे मजमूई तौर पर 9वां और अपना 5वां ओवर कराएंगे मीडिया एंड से। अच्छा छोड़ा, बाहर था काफी ये गेंद आमिर यामीन का। बड़े समझदाराना तरीके से खेल रहे हैं खुर्रम मंजूर। पहली इनिंग में ज्यादा बड़े स्कोर नहीं कर सके थे, उनको बाखूबी अंदाजा है गुलाम मुदस्सिर लेफ्ट आर्म सीमर हैं, इस मैच में इनको मौका नहीं मिल सका। मीर हमजा ने अच्छी बॉलिंग की सिंध के लिए, जो कि उनके सीनियर सीमर हैं। खुर्रम मंजूर इस टीम के सीनियर बैट्समैन हैं और ये भी चाहेंगे कि यहाँ पर अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। सिंध के बॉलर्स जो थे पहले दिन इनसे जो गलती सरजद हुई थी लेंथ के जिम में, अगर उस दिन पहले सेशन में अच्छी बॉलिंग होती, अच्छी लेंथ पर विकेटें मिल जाती हैं तो इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती। ये थोड़ी सी अंदर आई गेंद और उसको जाने दिया खुर्रम मंजूर ने। कोई खतरा मोल लेना नहीं चाह रहे खुर्रम मंजूर, ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाह रहे हैं विकेट पर। सेंट्रल पंजाब खिलाफ तवक्को उन्होंने बहुत देर से अपनी इनिंग्स ख़त्म करने का ऐलान किया। तकरीबन पूरा सेशन ही उन्होंने बैटिंग की जो कि मामूल से बढ़कर था। आज से वही तवक्को की जा रही थी जो पहला जो 1.5 घंटा है वो गुजारने के बाद इस इनिंग्स को ख़त्म कर देंगे और 200 280 300 के आसपास का हदफ जो है वो सामने रखेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं और उसकी वजह जाहिर है कि उनको अपनी बॉलिंग के बारे में कोई शुबा था क्योंकि बॉलिंग स्ट्रेंथ नहीं है सेंट्रल की। दिफाई अंदाज कप्तान सऊद शकील का, पीछे पड़े हुए बॉल को सीधे बल्ले के साथ खेले।
मुसलसल आवाज़ें लगाकर आमिर यामीन को दाद दे रहे हैं कि किसी तरह कोई और कामयाबी हासिल हो सके। ड्राइव बहुत शौक से खेलते हैं सऊद शकील, लेकिन फुटवर्क इतना ज़्यादा फैसला कुन नहीं था। पिछले ओवर से ही शशोपंज में रहे जब से आमिर ने ये बाल बाल बचे थे जब बोल्ड होने से, तब से 9 ओवर्स के बाद 28 पर 1। उमर बिन यूसुफ नंबर 4 पर आएंगे। ये भी ओपनिंग बैट्समैन है उमर बिन यूसुफ, लेकिन क्योंकि खुर्रम मंजूर इस मैच में खेल रहे हैं, साइम अयूब का डेब्यू करा गया है और इसीलिए इनको अपनी जो पोजीशन है वो सेक्रीफाइस करना पड़ी है। गेंद गैप में गई, 2 रन यहाँ पर हासिल किए खुर्रम मंजूर ने। 2009 में अपना पहला टेस्ट मैच खेला था पाकिस्तान के लिए खुर्रम मंजूर ने। उसी सीजन में ही इन्होंने अपना जो है बाद में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भी गए, वहां पर भी होवर्ट का टेस्ट मैच इन्हें खेलने का मौका मिला। और आखिरी जो इन्होंने टेस्ट मैच खेला था 2014 में श्रीलंका के खिलाफ था। यार बाद में ये T20 टीम में इनकी सिलेक्शन हो गई थी 2016 में जब बांग्लादेश ने वर्ल्ड एशिया कप की मेज़बानी की और उसमें ही पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करते हुए नजर आए। तो इनकी जो टीम में आमद थी वो खासी दिलचस्प थी। अहमद शहजाद और खुर्रम दोनों ने ही साइड मैच में श्रीलंका के खिलाफ जो 2009 का बदकिस्मत दौरा था उसमें साइड मैच में इन दोनों ने ही सेंचुरी बनाई थी। अहमद शहजाद ने 158 रन की इनिंग्स खेली थी, लेकिन एक ओपनर जो है उसका इंतखाब करना था चीफ सेलेक्टर अब्दुल कादिर को, और वो कुर्रा जो है वो इनके नाम निकला था। उस सीरीज में दरअसल ये बैटिंग कर रहे थे लाहौर के टेस्ट मैच में भी। जब अगले दिन खेल नहीं शुरू हो सका था तो ये शाम को नॉट आउट थे, लेकिन फिर अगले दिन का बहुत लंबा इंतज़ार हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट में तकरीबन 10 साल लगे पाकिस्तान को वापस टेस्ट मैच की मेज़बानी करने में। अच्छा पटक रहे हैं बॉल को मोहम्मद अली, जानदार बॉलिंग करा रहे हैं। निहायत ही जानदार बॉलिंग देखने को मिली है मोहम्मद अली की जानिब से। बाहर जाते हुए बॉल पर कोई रिस्क नहीं लिया सऊद शकील ने। यहाँ खुर्रम मंजूर की अगर मजीद बात करें तो ये 20 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मौजूद हैं। सन 2002 में इनका फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ था। और साइम अयूब हैं जो इनके आज ओपनिंग पार्टनर थे, उनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 7 महीने थी और आज वो इनके साथ ओपनिंग करते हुए नजर आए। काफी कुछ सीखने को मिलेगा साइम अयूब को अपने सीनियर बल्लेबाजों से। सरफराज अहमद का उनको साथ हासिल है, फवाद आलम का उनको साथ हासिल है। काफ़ी कम उम्र है अभी और आते ही उन्होंने अपनी बैटिंग का लोहा मनवाया। पहली इनिंग में शानदार बारी खेलकर गो कि दूसरी इनिंग में ज़्यादा लंबा नहीं रुक सके विकेट पर।
एक लम्हे के लिए सोचा था कि हुक किया जाए, लेकिन फिर जब देखा कि गेंद जो है लाइन के ज़्यादा बाहर है, अच्छा बाउंसर फेंका, साउथ को सोचने पर मजबूर किया अली ने। 31 पर 1। आज सेंट्रल पंजाब ने जैसी बैटिंग की पहले सेशन में, उन्होंने इस मैच को हम कह सकते हैं कि मैच को मार दिया। और अब जो सिंध की टीम है, यहाँ ऐसा लगता है कि ये खिलाड़ी अपनी इंफरादी इनिंग्स के लिए खेलेंगे। पहली इनिंग्स में पंजाब ने 8 बोनस पॉइंट हासिल किए, सिंध ने 7 बोनस पॉइंट हासिल किए बॉलिंग और बैटिंग में। और अब इनकी जो नज़र है वो 338 पर लगती नहीं है सिंध की। तवक्को की जा रही थी कि 300 का हिंसा अबूर करने के बाद या तैयब ताहिर की सेंचुरी स्कोर होने के बाद वो डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा वक्त ले लिया और अपने आप को कुछ ज़्यादा ही महफूज रस्तों पर डालकर सेंट्रल पंजाब ने ये कोचेज हैं सेंट्रल पंजाब के, ये नए नए आए हैं। ये जो पॉल साहब हैं, तो इनको भी इस टीम की जो स्ट्रेंथ है उसको समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। एक और अच्छा स्ट्रेट ड्राइव और मंजूर की जानिब से, कॉम्बिनेशन को समझने में इनको 1-2 मैचेस लगेंगे। असिस्टेंट कोच ये बिलाल शफात हैं, जो पॉल फ्रैंक आपकी स्क्रीन की दाएं जानिब। और सरप्राइज किया, खासा तेज बाउंसर था, खुर्रम बिल्कुल पोजीशन में नहीं थे हुक करने की। चौंका दिया खुर्रम मंजूर को आमिर यामीन जैसे छोटे कद के फास्ट बॉलर ने, और मुकम्मल तौर पर छोड़ना भी नहीं चाह रहे थे और आखिर में जाते जाते बॉल को थोड़ा सा छेड़ा खुर्रम मंजूर ने। विकेट कीपर अली शान भी पकड़ने में नाकाम रहे। अच्छा रोका अली शान ने, बहुत ज्यादा कद नहीं है इनका, लेकिन यकीनी उन्होंने भाई के जो रन्स हैं ये बचा लिए। रिवायती तर्ज के विकेट कीपर हैं अली शान। अच्छी कलेक्शन रही है इनकी इस मैच में। और जल्दी करनी पड़ी और एक बार फिर ये मौका गंवा दिया। पॉइंट से कोशिश की थी, मोहम्मद साद थे जो टीम के कप्तान, उनने साद ने निशाना साध लिया था, लेकिन लगी नहीं गेंद विकेटों को। बाल बाल बच गए। खुर्रम मंजूर अगर विकेटों पे लग जाती तो यकीनी तौर पर खुर्रम मंजूर को जाना होता वापस। वक्फे के बाद अच्छी बॉलिंग की आमिर यामीन जो हैं, ये बैट्समैन को बार बार हैरत ज़दा करते रहे हैं, मौसर का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि खुर्रम जो हैं ये अगले कदम पर आ न सकें।
एक और ओवर आमिर यामीन का खत्म हुआ 33 पर 1। अली अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे पवेलियन एंड से। उम्दा शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन तक जाहिर है कि नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन 3 रन हासिल किए सऊद शकील ने। इनको बिल्कुल अपनी नजरों के सामने खेला। स्टाइलिश बैट्समैन है सऊद शकील। खासा वक्त इनका गुजरा है पिंडी और इस्लामाबाद में सऊद शकील का, क्योंकि पीटीवी के ज़्यादातर मैचेस इसी इलाके में होते थे। बहुत रन इन्होंने बनाए थे इन पिचेस पर। वहीं से एक संजीदा बैट्समैन समझा जाने लगा। उससे पहले जब अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए तो वहाँ पर ये उतना मुतासिर नहीं कर सके थे जितना इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आकर वाइट बॉल की निस्बत अपना लोहा मनवाया। लेकिन इस वक्त जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ये बेहतरीन कप्तानों में से एक है सऊद शकील, और हम कह सकते हैं कि ये खालिद उस्मान के बाद सबसे इस वक्त अच्छे कप्तान है। और लेकिन आज इनका दिन रहा ये तैयब ताहिर का, इसमें कोई शुबा नहीं कि जिस अंदाज से ये खेलते हुए नजर आए और अपने आप को एक वर्सटाइल खिलाड़ी इन्होंने, वर्सटाइल एक बैट्समैन इन्होंने साबित किया है। बेसिकली ओपनर हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में जिस तरह की बैटिंग दरकार होती है खेलना जानते हैं। क्योंकि कल जब ईशन है उसमें तैयब ताहिर और अब्दुल्ला शफीक का शानदार किरदार। ये सोचा समझा मंसूबा लग रहा है कि जो दोनों बॉलर हैं इस वक्त सऊद शकील के खिलाफ अराउंड द विकेट आ रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा कवर का इलाका है ये इन्हें खाली छोड़ा हुआ है। तो मोहम्मद अली क्योंकि इन स्विंग करना चाहेंगे लेफ्ट हैंडर को, तो इस वक्त ये खिलाना चाह रहे हैं इस गैप में। ये जो आपको मिड ऑफ और कवर पॉइंट के दरमियान गैप लग रहा है कि आप कवर ड्राइव करने के लिए जाएं और वहीं से जो एक गैप बने बल्ले और पैड के दरमियान। लेकिन हुए नहीं टाइम ऑफ स्टंप के बाहर। सऊद अच्छी क्रिकेट सिंध और पंजाब दोनों की जानिब से 37 पर 1। One wicket for Amir Yamin. It has been a struggle on the field, off the field, because this session has really dried up. We were hoping for an excellent day of cricket, the last day especially, but somehow it is not what we expected on the last day of this game, because it started off very nicely. It was evenly poised throughout the 3 days, but this fourth day, somehow from
from some sort of planning from Central Punjab. They just dried up this game. Shah Faisal, your thoughts on that? Make a good point. Worth asking the Central Punjab management later today. What was the thought process behind delaying that declaration and taking Sindh completely out of the game? It was quite evident. You're not going to run through batting lineups on this pitch unless you throw them a challenge and tempt them, dangle the carrot at them. Central Punjab were very, very defensive in their approach. Negative, maybe a bit too harsh. Defensive, definitely yes. Yeah, we just don't want to be too extra critical over these tactics which Central Punjab have opted for. They know better of their bowling lineup. And the problem was that we're looking to play positive cricket. We're giving this message. We're trying to give this message that the intent has to be positive. That should reflect in your decision making. Today was the chance, first game of the tournament. They could have easily declared it on 280, 285. Should have given Sindh a bit of chance to go for that total. Because at the moment they are going to play for the draw. The reason we were so optimistic was the presence of Paul Franks and Bilal Shafat in the think tank of Central Punjab. I've seen this a lot more in county cricket where bold decisions are taken. You just have to risk losing to achieve that win. Smiling these three? Yeah, one thing that I'll put this question to you, Shah Faisal, that skill, yes, I agree. They're here to improve. Fitness, yes. But what was missing in our domestic culture was the approach. That's where they had to make a difference. And we didn't see that happen today. It's disappointing. And I just wonder how much of a take they would have taken from skipper Saad. How much would be his say in this decision? We've seen Saad, he's a good cricketer, but we haven't seen him very involved in the field. You see his body language, he's quite a timid character. How much of his role was in making that decision? In the air and dropped. An absolute sitter. Abdullah Shafiq with that injured hand should have gobbled it. Straight in, straight out. That is disappointing. We were looking for some excitement, was provided. Look what Abdullah Shafiq did. Good bouncer. Directly right into his helmet. Doesn't get any easier than that. Yeah, but the bouncer was good. It kept coming in at Khurram Manzoor. But injured hand or not, this is way too easy. Dropped a catch in the first inning also. Abdullah Shafiq, you're a fantastic batter. But this is equally important. Being able to hang on the catches, being a good fielder, it's all part of the game. Wonder how much would this cost the Central Punjab side, because we know that KMK is a experienced campaigner. He's been around for a long time. He's scored in all the formats. It's 37 for 1. 37 for 1. Bowling change from the pavilion end, Waqas Maqsood. And only continuing what we were talking in the previous over about the approach of Central Punjab. Skipper Saad must have been part of that decision. Paul Franks
It'll be really interesting. Probably you'll get a chance to speak to Saad in the post-match presentation. It'll be worth a question to see what was their thought process behind delaying that declaration. Very interesting to know. I know the answer. It has to be safety, because they opted for safety first. Well, it would be against the brand that we're trying to develop. The instructions and all the talk from the top is that you've got to look to play attractive brand of cricket. Go for the kill. And even if you have to take a chance to lose, you have to go for the win. We didn't see that from Central Punjab. Yeah, that is why we are talking here about it, because we were hoping, we were expecting a cracker of a game today. Two excellent sides. And look at now, they're just playing for a draw. That is not what we expected. Because remember, on the very first day, we were of this opinion that they will make a change, but they haven't. Let's get back to what Tayyip Tahir did. Excellent form. He's carried on that white ball form to this red ball form. It's just been brilliant. Strong. Not that tall, but very strong. He can ball all day long here, and he'll keep leaving those deliveries outside that off stump. South Shakil. Yeah, Tayyip Tahir had a good outing. That second innings, remember, he rescued the innings. And if we had known at a time that Central Punjab would have such a defensive mindset, then his innings is even better. Because 3 for 22, 4 for 59, they were in deep trouble. Edge taken! The wicket they were searching for, it's Waqas Maqsood, that man, getting the breakthrough, getting the best of South Shakil. He was so excellent outside the off stump, leaving the deliveries. But this one, he had to fetch and got that edge, and no mistakes made by the wicketkeeper. Good areas, excellent areas, and look at that carry. So had to play it just a little poke. If you're ultra critical, you would think that he should have dropped the wrist and let it go, but he couldn't do so. And there's been excellent bounce in this pitch. All the edges have carried. South Shakil bags a double failure. Goes for 7, 37 for 2. Second inning, following on, lead on की हुई है कुछ? Southern Punjab. Umair bin Yusuf is the new man in. He's got a job to do, job of defending. I wonder how long can you defend and keep surviving? That's the question. Because we know that one good delivery like it happened to South Shakil will take your wicket. So you got to show some intent of scoring runs too. Central Punjab is on top definitely. 8 wickets to get. I really want them to go close at least. Just make a match out of it. Just go close. Get 7 or 8 wickets maybe. Just make this day interesting. Waqas Maqsood didn't have a good day in the first inning. 29 matches, 1700, 8 runs, good conversion rate, 550s, 500s, best of 174. Very capable. He's batting at the top of the order. A possible 44 overs left, 45 overs left after this. It's a good comeback by Waqas, considering how he bowled in the first inning. This is his first over and he's already taken a wicket. I have this feeling that this might be his day.
because he's such an experienced campaigner. He has to come back. Let's have a look at how South Shakil, as you said, he had no option but to just go after this delivery. It's left arm over the wicket angle. The ball was coming in at him, so he had to play. And it just left him at the last minute. Excellent bowling. Oh, that's gone through. That has gone through for a boundary. So something is happening. Some excitement for Central Punjab as Waqas Maqsood bowled another good delivery. A nervous stroke from Umar bin Yusuf. Was too wide. Once again, he's just poking at it. It went in the air. Have to see how close it was to that fielder in the gully. But was aerial behind square. Little bit of panic setting in. Look at Sarfraz. He's not in his whites. I don't think they're worried at all. One wicket more down. You'll definitely see him whites very quickly. Enjoying some fruits at the moment. Sarfraz Ahmed, as we see a change in bowling. The captain bringing himself on. Mohammad Saad. He got the wicket in the first inning. The surprise wicket of Quram Manzoor. Fished outside the off stump. Got his wicket. This is what he will be looking to do again. 27 wickets. Best of 5 for 71. Teasing line and length. Yeah, that length is very, very teasing because he doesn't have a lot of pace. You see a lot of noise from the Central Punjab boys. They're reminding Quram Manzoor what happened in the first innings. Oh, it's close. Very close. No, says umpire. No, says umpire. Maybe the impact. That's the only reason that I can think of. Impact, in my opinion. With the naked eye, it looked like the impact was out. Did he get a stride in? He did. Very marginal. On another day, could easily have gone against the batter. Sajid Afridi ruled the impact outside the off stump. Marginal, you say. Clipping off stump. Hitting off stump. Let's see from side on how high did it struck him, because Quram Manzoor is quite a tall man. We'll have another look. That stride is good. The keeper has come up, because we saw that Quram Manzoor did charge him. Look at that. Oh. No comments. I don't think height is an issue. We can have a better idea from here how far down Quram Manzoor was. Well, I disagree, Ali. I think it's a good decision. You disagree to yourself? You said marginal. I said it's hitting off stump. It could have gone either way at best. That's all I can agree with. You're a good man. Well, something is happening. Exciting times of the day. That we are seeing some movement. Something is happening. Again, that use of the feet by Quram Manzoor. The wicketkeeper has gone back. Quram Manzoor, lucky to be still there. That these things happen. You get some in your favor, you get some against you. That's all part of the game. We're all humans. We are bound to make errors. That's all right. 43 for 2. A wicket for Waqas Maqsood in his first over. Suddenly you see something happening. There's energy in the field. This has been the pattern when we've seen the early part of the innings with a slightly newer, harder ball.
It does do a little bit. The batters need to hang in there. So if they spend that time, 15-20 minutes, it becomes easier for them to just negotiate those deliveries. That's why that decision could be very, very crucial, because that would have kept Central Punjab in the hunt. Yeah, let's have a look at the slip cordon. There were 2 slips there. Qasim Akram also in there. Very fine cricketer he is. Khurram Manzoor been dropped already by Abdullah Shafiq. One of LBW shot going in his favour. Everything happening now suddenly. Solid. Now let's have a look at that appeal again in real time. Oh, the impact. That's the only thing that goes in his favour, but still very marginal. But I know you say it marginal, but I hate to say it. I think it was hitting off stump. Well, we agree to disagree. No problem with that. Khurram Manzoor prevailed. They've got a job to do, Umair bin Yusuf and Khurram Manzoor, because we know one wicket can bring 2, 3 together. So you've got to be very careful. They need a partnership, a solid partnership from here on. Umair looks a bit nervous to me. I think he's feeling the pressure. Like we just said, if the wickets continue to fall, Central Punjab will remain in the game, and you see that 44 overs will seem a long, long way away. Yeah, they can express themselves, they can show how defensive their skills are. This is a good opportunity. Something what Abdullah Shafiq did. I think he was magnificent with that defense, covering his line. And positive too, together. Solid as a rock. 16 gone, 43 for 2. Mohammad Saad will continue. There's something about his bowling. Got the wicket of Khurram Manzoor in the first inning. Let's have a look. Again, that teasing line and length. Not much pace behind it. What do batter do other than just getting annoyed? He's the perfect bowler to break the rhythm of a batter. You saw that dismissal. Khurram Manzoor was lunging at it because he had so long to wait for the ball to come. He just played out in front. So that back of length is easier. So what approach do batters have against a bowler like him? Do they go all out against him, to start hitting them, attack him, or they go defensive? That's one way of doing it. Bang, 4. At his pace, asking for trouble this length, Khurram Manzoor saw it early and his eyes lit up. Absolutely smashed it. Took some of his anger out as well. Yeah, that's one way of doing it. You've got to attack. You don't let such bowlers settle. You asked me the question. It's just you got to wait that little bit longer. Still try and play underneath your eyes. Don't reach out in front because the lack of pace will make you do that. It's better. Still a little bit of hard hands one feels
but still wait that little bit longer. Played under the eyes. I know the situation doesn't allow Khurram Manzoor to go hard, but still you got to be a little positive. Search for runs, don't let him settle. He's already bowled his second over, just one boundary, and a huge LBW appeal against Khurram Manzoor, going in the favour of Khurram. Once again, the lack of pace almost made him lose his balance. 47 for 2. Two wickets for Central, could have easily been 4. 47 for 2. Khurram Manzoor still there on 28. Umar bin Yusuf 4. Sharp, good bouncer. Very good bouncer. He's showing some skill today, Vikas. He's realized that he didn't get many wickets in the first. It's about time that he proves. It's a good bumper and a very good line. And the height as well, although it was too short. But Umar, look at that. Another shot with indecisive mind. He's going through that phase, Umar bin Yusuf. The longer he stays in the middle, he's going to get better. That's the best chance for Central Punjab to dismiss him earlier on in his innings. It may just get to a stage, like you said, they've taken that catch, the decision goes in their favor. If they get close enough to victory and couldn't close it out, I'm sure they'll go back to the decision they made in the morning. Because they're making life hard for the Sindh batters. 2 slips and 2 gullies now. That's where they trapped Umar bin Yusuf in the first innings. It's rather 1 slip and a short point behind square. And now the fielder from the deep is also coming in. Runs. 2 of them. Change of plan, immediately change of angle as well from Waqas. Nice solid punch down the ground. Umar bin Yusuf feeling the middle of the bat. That does help grow your confidence. Leaning into it nicely. Collapsed on his back knee a little bit. That means that his weight wasn't really coming into the shot. That's why he didn't get the boundary. Better, but straight to the fielder. See the difference on that one. Weight coming into the stroke very nicely. The crunch of the middle of the bat. And that's how he lost his wicket in the first inning. And it was a beautiful catch by Qasim Akram of the same bowler. He's looking good. Umar bin Yusuf, 20 overs, rather 18 overs gone, 49 for 2.
Yes, as soon as the keeper goes back, KMK uses his feet. That's what he does. KMK. Khurram Manzoor Khan. That's what he calls himself. Thank you. Keeper up to the wickets. Saad is a typical kind of bowler that will flourish in English conditions. Cloudy, damp, wet pitches, especially. Bowl that fuller length, and I'll keep asking the questions. Punched nicely straight to the man. He's just not finding the gaps. The Sindh batters. And this is what happens when you don't actually know what's going to happen, because they're playing for a draw. They're not looking to chase down these 289 runs. They've lost 2 wickets. So they're in this position. It's a bit confusing, even for us. I was just talking earlier about cloudy conditions and English conditions. Saad being an ideal bowler. Looks like it's excellent conditions to bowl here as well. A slight cloud cover. Did Punjab leave? Take that. That's a boundary. The moment it left the bat, it was 4 runs written all over it. KMK. Nicely done. Short and wide. And bang. Muscled away. Absolutely smoked it. Khurram Manzoor looking increasingly confident against the military medium of Saad. 50 has been brought up as well for Sindh. Another 285 runs required to win in 40 overs after this delivery. Good fielding. Well, certainly stopped 2 runs. Saved 2 runs. 19 gone. It's 55 for 2. Drinks.
19 ओवर्स में 55 रन आए हैं। औसत महज 2.8 की है और सिंध की जो हदफ है उसके लिए वो खातिर खा इंटेंट नजर आई नहीं। 40 ओवर्स का खेल बाकी है। ये आप एक नजर डालिए, ये जो 2 विकेटें गिरी सऊद शकील को ऑफ स्टंप के बाहर मुसलसल बॉलिंग की जा रही थी, उसी गैर यकीनी की राहदारी में वहीं पर वो गलती कर बैठे। आमिर यामीन और वकास मकसूद ने एक ही खिलाड़ी को आउट किया। मोहम्मद अली ने बड़ा अच्छा स्पेल किया 6 ओवर्स का। मोहम्मद साद जो है थोड़ा सा बदकिस्मत रहे, विकेट लेने के उनके करीब आ गए थे लेकिन अंपायर ने एलबीडब्ल्यू की अपील मुस्तरद कर दी। नए हेड कोच सेंट्रल पंजाब के पॉल फ्रैंक नॉटिंघमशायर काउंटी से वाबस्ता रहे हैं, वहाँ कोचिंग करते रहे हैं और ये बड़ी काउंटी है इंग्लैंड की नॉटिंघमशायर। यहाँ से स्टुअर्ट ब्रॉड खेलते हैं, इससे पहले केवन पीटरसन इस काउंटी से खेला करते थे। कई सफ़े अव्वल के जो स्टार्स हैं उनकी वाबस्ती रही है। टिम रॉबिन्सन, क्रिस ब्रॉड। इस वक्त जो फील्ड है वो खासी दिलचस्प है। वो 7-2 की है और ये ऑफ स्टंप के आसपास गेंद को रखना चाहते हैं क्योंकि उमर जो है ये भी अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं और इनके भी सब्र का इम्तहान ले रहे हैं वकास मकसूद। फील्डिंग को मुसलसल जगाए रखा हुआ है अली शान ने और तैयब ताहिर ने जान पैदा करते हुए। और इसी शॉट पर आमादा कर रहे थे और हो गए। इस बार उमर उन्हें ग्राउंड शॉट खेला लेकिन उनके हाथ खासा दूर निकल गए थे उनकी बॉडी से। इसका यकीनी तौर पर वकास बुरा नहीं मनाएंगे, उन्हें दाम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा अच्छा फ्रंट फुट का इस्तेमाल किया, बॉडी से गो के थोड़ा सा अवे खेले लेकिन शानदार आंखों का और बल्ले का इस्तेमाल उमर बिन यूसुफ का। अच्छा कवर ड्राइव उमर ने लगाया, इससे इनके एतमाद में इजाफा होगा। दूसरा चौका है उमर का। थोड़ा सा गैर रिवायती अंदाज अपनाया हुआ है सेंट्रल पंजाब ने 7-2 की फील्डिंग के साथ। और कई कप्तान जो हैं बड़े इनोवेटिव होते हैं। नासिर हुसैन का मुझे याद है वो टेस्ट मैचों में कई बार ऐसा भी हुआ कि वो 8-1 की फील्ड के साथ उन्होंने एशेज में बॉलिंग कराई थी एक बार। इसलिए बड़े ही अच्छे कप्तानों में उनका शुमार किया जाता था और इंग्लैंड को सही मानों में एक वो जो रात में एक चिंगारी थी वो साबित हुए थे और अपनी कप्तानी की वजह से भी बहुत अरसा खेलते रहे। हालांकि उनकी फॉर्म जो है वो कप्तानी का बोझ आने के बाद मुतासिर भी हुई थी, उससे पहले बड़े अच्छे बैट्समैन थे। यहाँ पर भी जिन कप्तानों का गुजर हुआ है पिंडी स्टेडियम में उनमें नासिर हुसैन का शुमार किया जाता है। सन 2000 में वनडे इंटरनेशनल मैच में इंग्लैंड के वो कप्तान थे। अमूमन अटैकिंग कप्तान ही कामयाब रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट में और अपनी अटैकिंग कप्तानी की वजह से काफी मशहूर मकबूल मोहम्मद साद कप्तान है सेंट्रल पंजाब के। ये जो है बहुत ही मुख्तलिफ तर्ज के कप्तान हैं। जब किसी खिलाड़ी को क़यादत सौंपी जाती है तो आमतौर पर ज़्यादा एनर्जी आ जाती है उस क्रिकेटर में कप्तान बनकर, लेकिन साद का मामला मुख्तलिफ है। ये खुद में मगन रहने वाले साहब हैं। 20 ओवर के बाद 59 पर 2।
मोहम्मद साद को अपना चौथा ओवर शुरू करना है मीडिया सेंटर एंड से। खुर्रम मंसूर को उन्होंने रन जरूर दिए लेकिन खासा परेशान किया है। ज़्यादा स्ट्राइक पर उन्हें रखा है विकेट कीपर को ऊपर बुलाकर ताकि इनका जो फुटवर्क है वो महदूद होकर रह जाए और गेंद के पैड पर लगने का इम्कान रहे। पिछली इनिंग में भी इसी तरह जाल बिछाकर खुर्रम मंजूर को खेल से बाहर किया था, अलीशान को ऊपर लेकर और 2 स्लिप बुलाकर, और इस इनिंग में भी खासा परेशान करके रखा हुआ है साद ने। खुर्रम मंजूर को आजादाना नहीं खेलने दे रहे अभी तक। लेकिन अब खासी हद तक सेट हो गए हैं खुर्रम मंजूर। उनके खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील अंपायर ने रद्द की और उससे पहले एक कैच का मौका था, अब्दुल्ला शफीक उसको नहीं संभाल सके और अब्दुल्ला जो है अगर उनके हाथ में चोट आई हुई थी तो ये कोई इसमें मुजायका नहीं था कि ये बाहर चले जाते, लेकिन ये गेंद बाहर जाएगी। इस आउटफील्ड के ये बड़ा दिलकश स्ट्रोक, उमर बिन यूसुफ बड़े आला स्ट्रोक प्लेयर हैं और उसी का मुजाहरा उन्होंने कर दिखाया। उमर बिन यूसुफ में एक मुस्बत बात देखने को मिली है कि वो अपने शॉट्स नहीं रोक रहे, बड़े शानदार तरीके से कदमों का इस्तेमाल भी करते हैं और इस बार बैकफुट पंच किया उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से। शानदार 4 रन के लिए मोहम्मद साद की ये बॉल काफी स्लो थी। इस रफ्तार के साथ आप इस लाइन और लेंथ के मुताबिल नहीं हो सकते क्योंकि ऑफ साइड में एक भी फील्डर पीछे नहीं है बाउंड्री की रखवाली के लिए। और टेम्पटर यहाँ इनके अंगूठे पर चोट लगी हुई है और इसलिए स्लिप में फील्डिंग नहीं कर रहे। ज्यादा वक्त जो है दूसरी स्लिप में अब्दुल्ला गुजारते हैं और अगर आपको इतनी ज्यादा चोट है और ऐसा दिखाई दे रहा है कि हल्की हल्की स्वेलिंग भी होगी तो आप क्यों ना बाहर वक्त गुजारें, क्योंकि अगर एक तो टीम ने मौका गंवा दिया आपकी वजह से और फिर आपकी जो चोट है वो और ज्यादा गहरी हो सकती है। 64 2 विकेट नुकसान पर सिंध। एक आसान कैच, आसान मौका गंवाया था अब्दुल्ला शफीक ने। शॉर्ट बॉल थी, मिड विकेट पर खेलने गए थे, हाफ शॉट थी और चोट होने के बायस कैच गिरा दिया। जैसे कि तारिक आप बता रहे थे कि इनको बाहर और इनके अपने कैरियर के लिए भी ये खतरनाक साबित हो सकता है कि ये बाहर ज्यादा आराम करते, क्योंकि मैच अब इस मरहले में है कि इनको थोड़ा सा अपने कैरियर के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का असासा है अब्दुल्ला शफीक। ये बहुत ही आसान सा कैच था, लेकिन क्योंकि ये खौफ था जहन में कि आपको अपना वो जख्म बचाना होता है, खुर्रम मंजूर को नई जिंदगी मिली और अब वो लंबी इनिंग्स खेलने के मूड में लग रहे हैं। पहली इनिंग्स में जल्दी आउट हो गए थे, फिर फवाद आलम को आकर सूरत हाल को संभाला देना पड़ा। ये खुर्रम मंजूर के ज्यादातर जो अटैक है वो उनके पैड्स पर किया है सेंट्रल पंजाब ने, लेकिन जो दीगर सिंध के बैट्समैन हैं, सऊद शकील, उनसे पहले साइम अयूब थे और अब उमर, उनके खिलाफ हिकमत अमली वो मुख्तलिफ है। उनको ऑफ स्टंप के बाहर खिलाने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर जूं ही
उमैर सामना करने के लिए आए। 7 फील्डर्स ऑफ साइड में नजर आ रहे हैं। ऑन पर खेलना पसंद करते हैं खुरम मंजूर। शायद इसी का अंदाजा है सेंट्रल पंजाब के कप्तान और बॉलर्स को कि वहां पे कोई जाल बिछाकर फंसाया जाए खुरम मंजूर को। दोनों जो कप्तान हैं सऊद और मोहम्मद साद, इन दोनों के फैसलों में आपने क्या फ़र्क पाया? इनकी कप्तानी में अयाज कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कीजिए। पहले इनिंग में मोहम्मद साद के जल्दी क्विक रिस्पॉन्स फैसलों ने खेल में अच्छा इंटरेस्ट पैदा कर दिया था। सऊद शकील और सऊद शकील ने एक स्पिनर के साथ उतरे थे वो, और बैटिंग में सरफराज को ऊपर खिलाया जा सकता था। एक अब एक नई चाल चली गई है। जो मिड विकेट पर फील्डर थे उनको पीछे हटा दिया गया, और ये इस गरज से किया गया है कि उमैर बिन यूसुफ के जहन में ये शक रहे कि बाउंसर आएगा और वो अगला कदम पूरी तरह ना निकाल सकें गेंद की पिच की जानिब। फिर अगर ड्राइविंग लेंथ पर इनको गेंद की जाती है, उसमें अगर ये गलती करें, ये देखिए तकरीबन ये 3/4 बाउंड्री पर एक फील्डर खड़ा किया हुआ है पीछे। जी बिल्कुल, लेकिन वकास मकसूद की इतनी पेस और इतनी स्पीड नहीं है, इतनी तेज गेंदें नहीं करते। वकास मकसूद चाहते हैं कि उमैर बिन यूसुफ जो हैं ये हाथ दूर बढ़ा कर खेलें, लेकिन ज़्यादा रफ्तार नहीं थी। 65 पर 2। सैंतीस ओवर्स में 273 रन दरकार हैं सिंध को। 8 विकेटें उनकी बाकी हैं, और अब इस मैच ये गलती करें, ये अच्छी सोच है, अच्छी फील्ड है ये। अटैक करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि कोई विकेट उनके हाथ लगे और ब्रेक थ्रू आए मैच में। सियालकोट की बासी हैं मोहम्मद अली, और तालीम याफ्ता क्रिकेटर्स में इनका शुमार किया जाता है। बॉलिंग के रूल्स को अब समझने लगे हैं, और पिछले 1 साल में इनकी रफ्तार बढ़ी है मोहम्मद अली की। कुछ अर्सा ये डिपार्टमेंट क्रिकेट में दिखाई दिए थे, ग्रेड 2 क्रिकेट में भी नजर आते रहे, लेकिन सेंट्रल पंजाब की इस टीम के ये सबसे अहम पेसर है। देखिए ये शॉट खेलना चाहते हैं, लेकिन ख्वाहिश है बॉलर की और पंजाब के कप्तान की कि ज्यादा स्क्वायर खेलें ये मिड विकेट की बजाय। खुरम फॉल ओवर ये कर जाते हैं कभी कभार। अंदर आया अली का ये बॉल और मिड विकेट पर खेले खुरम मंजूर। 1-2 कदम चल आए थे खेलते खेलते इस गेंद को।
सिंध ने बड़े नामवर ओपनर्स साल से पैदा किए। नाउमल जौमल वो पहले बड़े ओपनर थे सिंध और कराची से जिन्होंने शोहरत हासिल की। ऑल इंडिया की जो पहली टेस्ट टीम थी जो इंग्लैंड के दौरे पर गई थी 1932 में, वो उसके ओपनिंग बैट्समैन थे नाउमल जौमल। यार क्या मैं पाकिस्तान के बाद बहुत अरसे तक वो पाकिस्तान क्रिकेट से भी वाबस्ता रहे। एक ज़माने में वो जो बड़े उर्दू अखबारात होते थे उनके लिए स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग किया करते थे, क्रिकेट की रिपोर्टिंग। 1954 का जो पाकिस्तान का दौरा था जिसमें फजल महमूद ने पाकिस्तान को ओवल में टेस्ट मैच जितवाया था, उस मैच की वो रिपोर्टिंग करने के लिए इंग्लैंड गए थे। फिर अलीमुद्दीन आए। हनीफ मोहम्मद के मुतालिक कुछ भी कहना उस सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। यहाँ पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े ओपनर थे हनीफ मोहम्मद। और बाद अज़ाम मोहसिन खान ने बड़ी शोहरत हासिल की, सईद अनवर। 23 ओवर्स के बाद 66, 2 खिलाड़ी आउट। एक लम्हे में ओपनर्स की लिस्ट में आसिम कमाल भी आए थे तारिक सर। ओपनर मिडिल ऑर्डर में हमने उनको काफी खेलते हुए देखा, आसिम कमाल को। एक ही टेस्ट खेले थे ना। उसामा मीर जो है, अब इनके पास भी वक्त है कि ये भी अपने नए समंदर पार जो हेड कोच हैं उनको मुतासिर करें। पहली इनिंग्स में इनका जाहिर है कि खेल ऐसा था कि एक ही विकेट ये ले सके थे, लेकिन यहाँ खासे रन्स हैं खेलने के लिए। आप ज़्यादा गेंद को फ्लाइट कर सकते हैं, बैट्समैन को उकसा सकते हैं। और वैसे भी दूसरे और चौथे दिन के बीच में खासा फर्क होता है, मदद मिलती है आपको, आप कहीं भी खेल रहे हो किसी भी सरफेस पे। और इस लम्हे दोनों बैटर थोड़ा रिलैक्स भी हैं, वो विकेट बचाने के चक्कर में है। उसामा के पास काफी अच्छा चांस। ये देखिए टर्न बाउंस, वो तिलिस्म देखने को मिला जो कि लेग स्पिनर का खासा है। ब्रेक मिला बॉल को छोड़ के किया उसामा ने। अली शान भी बीट हो गए। अच्छी गेंद थी ये उसामा मीर की। ड्रिफ्ट जो है वो मिल रही है और उसकी एक वजह जो है ये हवा भी है। उसामा के अकब में जो इस वक्त हवा का रुख है वो इनकी मदद कर रहा है ड्रिफ्ट के लिए। जो आपकी स्क्रीन के इस वक्त बाएं से दाएं जानिब चल रही है, ये देखिए उसी हवा में गेंद ड्रिफ्ट हुई और फिर बैट्समैन को खेलने पे मजबूर किया, वहां से ये टर्न हो गई। ये अच्छा शॉट है इस बार, उम्दा फुटवर्क खुर्रम मंसूर का और 4 रन उनने पा लिए। ये सही तरीका है कि आप गेम की पिच पर पहुंचे और वहीं से निपटे लेग स्पिनर के साथ। हालांकि ये अगेंस्ट द स्पिन शॉट खेला था, लेकिन बैट और पैड का अच्छा इस्तेमाल किया। आखिर तक बॉल पर नजर रखी और 2 फील्डरों के दरमियान से खेल दिया। मिड विकेट और मिड ऑन के दरमियान से
4 रन हासिल किए खुर्रम मंजूर ने इस बार। 2015 में एक वक्त ऐसा भी था जब ये पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच खेलने के भी उम्मीदवार बने थे। उसामा इंग्लैंड के खिलाफ अबू धाबी की होम सीरीज में, इसके बारे में आगे बात होगी 72 पे। तो एक एक खिलाड़ी वकास और आमिर ने आउट किया है, और एक जो बेहतरी आई है सेंट्रल पंजाब की बॉलिंग में कि उन्होंने नो बॉल सिर्फ एक ही की है इस इनिंग्स में। पहली इनिंग्स में दरिया दिली दिखा रहे थे, तमाम ही बॉलर्स ओवर स्टेपिंग करते हुए नजर आए। बेहतरीन दिफा उमैर बिन यूसुफ का। जहाँ बहुत मेहनत करते हैं ये पाकिस्तान में जितने भी ग्राउंड्समैन हैं, और रावलपिंडी में तो हमेशा ही अच्छी कंडीशंस मिलती हैं, उम्दा आउटफील्ड, और पाकिस्तान की सबसे अच्छी बिलाशुबा फास्ट बॉलर्स के लिए विकेट है और स्ट्रोक प्लेयर्स के लिए भी। पाकिस्तान में एक और बड़ी अच्छी पिच है, वो कोयटा की है, बुगटी स्टेडियम की, और वो रावलपिंडी की पिच से भी हम समझ सकते हैं कि उसकी जो रेटिंग है वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ इतना अच्छा बाउंस है, स्पिनर जो है गेम टर्न भी कर लेते हैं, फास्ट बॉलर को बाउंस मिलता है, बैट्समैन अपने शॉट्स खेल सकते हैं। बिल्कुल तारिक साहब, कहीं ना कहीं मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि क्या दोनों शहरों के मौसम में भी मुमासलत पाई जाती है? उधर का मौसम भी कदरे ठंडा और इधर का मौसम भी ठंडा मीठा होता है, इस वजह से विकेट्स में थोड़ी मददगार साबित हो जाती है बॉलर्स के लिए। ये दोनों पहाड़ी इलाके हैं, लेकिन जो मार्गला के पहाड़ हैं ज़ाहिर है ये सरसब्ज हैं, और यहाँ जो है पिंडी की निस्बत हवा ज़्यादा तेज़ चलती है कोयटा में। और किनारा लगा और बमुश्किल गई ये गली के ऊपर से। उसामा खासे कदावर हैं और ये तकरीबन बॉलर के हाथों में खेल गए थे, जो चाह रहे थे कि ऑफ साइड में दूर से ड्राइव करें। मोहम्मद अली कामयाब हो गए थे उमैर बिन यूसुफ को बाहर लाने में। कहीं ना कहीं उसामा की उंगलियों के पूरों के बिल्कुल पास से गई ये गेंद। लंबी कद के मालिक उसामा थोड़ा सा देर से उछले और गेंद पलक झपकते में बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। कैच हो सकता था। माजी में कई जो कप्तान होते थे वो लंबे कद के फास्ट बॉलर को गली में खड़ा किया करते थे इसी मकसद के लिए कि वो उछल कर कैचेस पकड़ लें। जैसे पाकिस्तान के सरफराज नवाज से अब जोएल गार्नर थे वेस्ट इंडीज के। फास्ट बॉलर्स को गली में खड़ा करने का खासी देर तक रिवाज रहा। उसामा जो है अगर ये बेहतर एंटिसिपेट करते तो ये कैच ले सकते थे। वो अपने साथी खिलाड़ियों को बता रहे हैं कि उंगलियों को छू कर गई है बॉल। अगर थोड़ा सा जल्दी जंप लेते तो इस शॉट को कैच में बदल सकते थे उसामा मीर। और वो बता रहे हैं, वजाहत दे रहे हैं कि तीसरी उंगली को छूती हुई बॉल गुजरी है।
बदकिस्मत रहे मोहम्मद अली। अच्छा मुकाबला इस वक्त उमैर और मोहम्मद अली के दरमियान जारी है पिंडी में। दिलचस्प क्रिकेट 76 पर 2। Osama Mir, all eyes on him, how he bowls. It's the leg spinner who has this potential of changing the game. Can he do it? That's the question. We did see some spin in the last over, and again, this is thick outside edge. Slow down a bit. They should get 3. Yes, they do. Because we know that leg spinners can do it. And Osama being quite tall, you've seen there's still good bounce in this pitch. He ripped one across the face of the bat in the last over. This one was slightly flatter. The edge went along the ground on that occasion, away from that slip fielder. See if Central Punjab is going for victory. You see Osama turning the ball. Could easily bring a gully in. They have nothing to lose here. Do you think they really are? This is better than going through the motions. Just give it a try. You never know, like he said. Yeah, because this Sindh side is a quality batting lineup. They still got Quaid-e-Azam, Saad Khan, Sarfaraz Ahmed, Asif Mahmood to come. It's going to be a mighty task. If it has to happen, it has to happen now. Could easily bring in that fielder from mid-wicket, show him the gap on the onside, allow him to go against the spin. That gully fielder, strengthen the offside field, the close catchers, do something. "33 overs remaining in the day. It's 79 for 2. What? Another no ball. That's not going to work. That's not going to help their cause. They're looking to take wickets. Long strides. He's a tall lad. We can't tell from here, definitely. Cuts well for 1. $80 for 2. They'll still be worried. Still have to negotiate with those 33 overs in the day remaining. And I'm pretty sure that Central are going to make not life easy for them. To get through to the 18th over, 18 overs from now, where they can start the last hour and the count towards that 15. We've seen in games like this, keepers can shake hands at the beginning of that hour or halfway through that hour, 18 overs before that. Yeah, that's why I say if it has to happen, it has to happen right now. These two bowlers, Muhammad Ali
from one end, Osama Amir, the leg spinner from one end. They'll have to run through the Sindh side. Mohammad Ali has the potential to do it, and we saw that yesterday. He did run through that middle order of Sindh. He will have to do it one more time for his side. Strong lad, good boy. Round the wicket this time. So all these tactics now coming into play. How can they just break the concentration of these two, Khurram and Umair bin Yusuf? They've got a fielder set for this shot, who is making him play that pull shot. Two fielders, one in front of square and one leg gully. So that the plan is clear, and also in the deep, there's two more fielders in the deep. So it's going to be exclusively short pitch bowling from Muhammad Ali for that little phase coming up. Bodyline is the way forward for next probably 1 hour or so for Central Punjab. They've got the field set, they're trapping him for that short deliveries, two slips in place also. There's a short point also, there's short leg, 45, deep square leg, deep fine leg, everybody. Very nicely. Didn't try to keep it along the ground, just rose with the bounce. Excellent timing. Very unlikely, but Sindh requires another 252 runs to win. Are they even going for it? That's the question. Do you want to question these tactics from Central Punjab? Umair bin Yusuf likes to go for that drive. He's already lost a wicket and also tried streaky drives in this innings. Instead, Central Punjab has gone the other way around, going with the barrage of short pitch stuff. Eggs, just love them. If I count your calories, that's 1,000 for the day already, just in terms of the cakes. I'm so sorry, teacher. That's a good one. Sharp one. But guess what? It's a no ball. That was better directed. But like I said, it takes a lot of energy out of you, and this one is just overstretching, conceding another run. More than that, Muhammad Ali will have to run in one more time. Clearly over. Good one again. He's bending his back. Muhammad Ali from Sialkot. Good bowler. He's have a good game, this one. It's 87 for 2. Manzoor closing in on yet another 50 in first class cricket. Umair bin Yusuf 24. If you're going for the kill, there's enough time at least to put some pressure on Sindh. You've got two right-handers batting. Surely you can bring another fielder in catching position. Just put the batters under pressure, even if you go for runs. Pulled straight to the man.
That will bring up 46 runs for Khurram Manzoor. Quickly, partnership has been brought up in the meantime. Khurram Manzoor slams his bat against his pad because he saw the long hop, couldn't capitalize. Too flat Azam for my liking. There's no temptation for the batters to come at him. This should be an ideal scenario for a leg spinner where runs really don't matter. But if he can buy himself a couple of wickets, it will really give him some confidence. That's more like a little slower at least, although it wasn't really flighted high, but the pace was just about right. Yeah, remember, he's playing first-class cricket after 2 years. He's played white ball cricket throughout those 2 years. That's a good run. Be careful with that Tayyib Tahir throw, I tell you. So yes, I can give a little bit of benefit to Usama. He's making a comeback to Pakistan domestic circuit. His pace may vary. It might be inconsistent with his line and length. So probably as the season goes on, we will see better of him. Because he has the potential. He's tall. He's got that high arm action. He spins the ball also. It's just the more he bowls, better he will get. 89 for 2. Field is the same for Muhammad Ali, but he's changed the angle. That's better in my opinion. Just angle into the body of right-handed Umar. Face some difficulty with that ball angling in, even at that short pitch length. Mayor cannot just simply duck underneath it. He's got to weave out of the way as well. He's not happy with somebody moving right in front of the side screen. It's a local boy. You got to be nice to him. He brought you some snacks just now. He's my favorite. One can't help feeling that Central Punjab could have had a better face at it. First their approach with the bat towards the last 45-50 minutes of their innings, and now with the ball even. Oh, that's a good one. It's really a good one. Look at that. Probably could not quite judge the length of this delivery. And that angle as well. Kept coming at him. He couldn't duck underneath, couldn't sway out of the way. In the end, he just allowed the ball to come and hit him. Yeah, you bring me back to that same point again. Something that you were earlier talking about. Central Punjab winning this game. What are the possibilities? Why are they in this position? And I'll go back to the same answer. It's the approach that we were hoping, that we were looking
for it that it will change, that positivity, the early declaration. Because by just giving 59 overs and to win 330 odd runs, it's never going to happen. Teams will not choose to go after that total in so less overs. So had you declared at 280 maybe, given them enough chance where they could have thought that they could have gone after the target, we might have seen some action, some difference. But like this, they've just killed it. Edged. You get a couple of runs. Completely agree with you, Ali. You see, there's still something happening on the pitch for the bowlers. It's not straightforward. But if you had asked the batters to go hard at it, chasing a target, they would have taken more chances. They would have given you more opportunities. What do you think? Is it the lack of trust in your bowlers, or they were so sure that Sindh will chase it down? What do you think? I think they weren't clear in their thoughts. They weren't clear in their plans, because even in the morning when you saw them, little chat, they weren't really sure of how long they wanted to bat or how much they needed. He did that on purpose. I can tell. 93 for 2. So that's what happened in Faisalabad in this round 1, third match. Northern 529 runs. That's a king-size total. Mubassir Khan scoring 170 runs. Hassan Khan taking 3 wickets. In reply, they were follow-on. Southern Punjab, Zain Abbas scoring a century. In the second inning, they were bowled out on 265. Imran Rafiq scored 90. And 8 runs Northern had to chase, and they did it with 10 wickets in hand and won the game by 10 wickets. Good result for Northern. Yeah. Wickets for Noman Ali, the left-arm spinner, and Musa Khan. That's a good win. Good start to the season. They've earned themselves 25 points out of that game. 16 of winning, 9 bonus points. And win after following on, after getting the opposition to follow on also. Extra bonus points. They're a long way ahead. Turn for Osama Mir, even with a flatter trajectory. Turn Khurram Manzoor out. Again, Central Punjab won't get as many points because they weren't brave enough. Absolutely. Punched through the gap for 1. 50 for Khurram Manzoor. Fighting, battling knock from the veteran right-hander. 55th 50 in first-class cricket. Take a bow. No is the call. Rightly so. Don't run yourself out. It's all good. We're all expecting a draw. The cricket has been scintillating. Uh-oh, look what they've done. Look what they have done. This is exactly what we were talking about. You don't want to be running yourself out, and that is exactly what Umair bin Yusuf has done. What were they thinking? What were they doing? Well, at the moment, we don't know who's got out because both the men are staying in the middle. Umair bin Yusuf is still having a word with Khurram Manzoor. You'll have to see. Did they cross? Who came out first? Who made it first? The drama that you didn't want. We've had some. You're looking to draw a game. Why would you do that? Oh, that is Khurram Manzoor's fault, for sure. He called him and just suddenly said no, it was too late by then. You have a look at that from other angle.
It's a photo finish at the non-striker end though. The straight-on angle would help. Umpires haven't made the decision just yet. We'll have another look. Look at Khurram Manzoor. Forget about he says yes, he says no. By the time it was late. By the time it was late. Such a Pakistani thing. It's not the first time that we're seeing this. So who's out? Who's not? Who's staying? Who's going back? That's the question. Everybody's looking at there. Who's staying? Who's going back? Looks like it's Khurram Manzoor. Looks like Khurram Manzoor. I think, yep, the decision's made. The substitute brought him a couple of extra bats. I don't know why, but he had to carry them all. Khurram Manzoor just got his 50 and out. Why is he not happy? The only person who should be angry is himself. He has no one to blame but himself. 50 well played runs. Run out, it's 94 for 3. Falham on crease. Tension, definitely. Just on over again, they were smiling. And look what one wicket has done to their expressions. 29 more overs to go. A minimum of 29 overs. 13,947 runs. 53 more runs, and he would be getting up to 14,000. He scored his 42nd ton in this match in the first innings as well. Still has a job to do. The man always has to play under pressure. I said no drama, and they've created one. Let's have a look at it again. What happened there? Umar bin Yusuf drives it. Not quite driving it, but look at Khurram Manzoor. He says yes and then realizes that there is no single. And just probably a second's difference, he's just put the bat down, Umar bin Yusuf. Just beat Khurram Manzoor to the line. Don't feel guilty. It was not your fault, Umar bin Yusuf. Good fielding. Top work. Good energy. Abdullah Shafiq has been dropping catches in this match, but very good along the ground. Is there enough time for Central Punjab to force something out of it? It's a funny game, cricket. You just never know. One can bring two, two can bring three. But right now, if it has to happen, it has to happen now. 244 runs to win. I think they're not thinking about that. So not we are. In the morning today, we were all so excited that we're going to have a great day of cricket. Central Punjab will give themselves a chance to win this game and earn themselves 16 extra points. But they were happy with 6. What do we do? Ahmad Ali still trying hard though. Talking about the points in this game, Sindh so far have got 7 points and Central Punjab 8. And if this game ends in a draw, both the teams will earn another 5 points. So on points, Central Punjab is winning by just 1 point. And if you consider how much they've dominated this game, in
in reality, they should be disappointed with that result. They had Sindh on the ropes, and they could have gone for the kill. Again. Somebody reminds them that they're playing for a draw. I think they've forgotten it. Suddenly Umar bin Yusuf is looking for those short singles, those quick ones. Look at that again. Seeing all that indecision and nerves from Sindh's batters, Paul Franks must be thinking to himself, he should have given them a sterner test. Longer time to bat and survive. Funny things do happen on a fourth day. We will all wonder what might have been. Nicely done. That sounded so sweet by Umar bin Yusuf for a boundary. It's an excellent transfer of weight. It's ping of the middle of his bat. That was a very, very sweet blow. Look at that, this little forward press. And almost took the short point fielder. It was fiercely struck. Umar bin Yusuf, 30. He needed some runs because he got a failure in the first innings. He's a good player. Good player to watch as well. Oh, what happened there? A fielder was placed right in front of his eyes and he punched it straight to him, who couldn't quite gather it in the end. That's Aliza Rayab for you. Look at that. That was a hard, strong punch. It went straight to him at this level. A tough, a difficult one. He's not there for a full-blooded drive like that. He's there for a soft poke, a little tentative prod. This is quite nicely timed, and it did fell short. Players are taking drinks as Sindh has reached 98 for 3.